Assalamu alaikum, my dear students. I hope everyone is fine. So today I am going to discuss a topic. This is for the GNM second year students. The topic's name is ovarian cancer. So first I will tell you the definition of the topic. Ovarian cancer is when abnormal cells in the ovary begin to multiply out of control and form a tumor. जब एबनॉर्मल सेल्स ओवरी में मल्टीप्लाई हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल अनटिल दे फॉर्म ए ट्यूमर। यूजुअली अगर हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर ऑफन गोज अनडिटेक्टेड अनटिल इट हैज़ स्प्रेड विद इन द पेल्विस एंड स्टोमक। अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की, ओवेरियन कैंसर इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ गायनिकोलॉजिकल कैंसर डेथ्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इन एपिडेमियोलॉजी अगर हम देखेंगे अबाउट 1 in 70 women will develop ovarian cancer in her lifetime. Family history is the most significant risk factor. Risk factor की बात करेंगे, family history is the most risk factor, and the incidence of this type of cancer increases about 40 years of age, and half of women at diagnosis are older than for 60 years. अगर हम टिल डेट की बात करेंगे अबाउट ओल्डर दैन 60 ईयर्स डायग्नोज जो भी पेशेंट हुए हैं वो हैं जो जिसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है ओवेरियन कैंसर। सो नाउ आई विल टेल यू द कॉजेज ऑफ द ओवेरियन कैंसर। I already told you a family history is the most significant risk factor of ovarian cancer. And next is the genetic mutations of gene associated with ovarian cancer like BRCA1 and BRCA2. BRCA1 and BRCA2 means breast carcinoma 1 and breast carcinoma 2. These are also known as caretaker genes. These are unrelated proteins and both are expressed in cells where they help repair damaged DNA cells. ये BRCA1 एंड BRCA2 हेल्प करते हैं रिपेयर DNA डैमेज DNA सेल्स में। अगर DNA म्यूटेशन इटसेल्फ डैमेज हो जाता है देन दे कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर्स आल्सो। एंड नेक्स्ट कॉज अगर हम देखेंगे हम देयर इज़ अ यूज़ ऑफ सर्टन फर्टिलिटी ड्रग्स एंड हार्मोनल थेरेपीज़ लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस, ये भी हमें लीड करते हैं ओवेरियन कैंसर की। एंड इफ देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी until 40 or 50 years it can also lead to ovarian cancer. And one of the another cause अगर हम देखेंगे that is endometriosis. Endometriosis means disorder in which tissue that normally lines the uterus grows outside the uterus, and this tissue can be found in ovaries and fallopian tubes. This can also lead to ovarian cancer. सो नेक्स्ट अगर इस टॉपिक की बात करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी या टाइप्स की, तो टाइप्स में ही हमें पता चलता है कि ओवेरियन कैंसर कैसे ग्रो हो जाता है सराउंडिंग पार्ट्स में। सो टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स इसमें अगर हम देखेंगे देयर आर जर्म सेल ट्यूमर्स. जर्म सेल ट्यूमर्स अराइज फ्रॉम द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स. जर्म सेल ट्यूमर्स हमें अराइज हो जाते हैं सेल्स में जहाँ एग्स हम ओवरी में एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो नेक्स्ट इज स्ट्रोमल सेल ट्यूमर्स. स्ट्रोमल सेल ट्यूमर्स अराइजेस इन कनेक्टिव टिश्यूज़. कनेक्टिव टिश्यू सेल में हमें अराइज हो जाते हैं दैट प्रोड्यूस हार्मोन, जहाँ हमें हार्मोन प्रोड्यूस हो जाते हैं वहीं से ये कैंसर प्रोड्यूस हो जाएगा. एंड थर्ड वन इज़ एपिथेलियल ट्यूमर्स. एपिथेलियल ट्यूमर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी. ये आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी में ओरिजिनेट हो जाता है. एंड एपिथेलियल अगर हम एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात करते हैं दिस इज़ द मोस्ट ओवेरियन कैंसर एंड एपिथेलियल इन ऑरिजिन. मोस्ट अगर ओवेरियन कैंसर हम देखेंगे मोस्टली दे आर एपिथेलियल इन ऑरिजिन. एंड डिफरेंट टाइप्स और ओवेरियन कैंसर एपिथेलियल कंस्टिट्यूट 90%. अगर हम 90% ओवेरियन कैंसर की देखेंगे तो वो एपिथेलियल इन ऑरिजिन ही होते हैं. एंड नेक्स्ट आर
जो बाकी 10% हमें रह जाते हैं वो जर्म सेल ट्यूमर्स एंड स्ट्रोमल सेल ट्यूमर्स की वजह से हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लाइक जो हमें साइंस एंड सिम्टम्स दिख जाते हैं, इसमें हमें पहले अर्ली सिम्टम्स भी हो जाते हैं या लेटर सिम्टम्स भी होते हैं। यूजुअली अगर अर्ली की बात करेंगे, अर्ली सिम्टम्स वहाँ दे आर ऑफन वैग, सो मेनी वुमेन टेंड टू इग्नोर देम। जो अर्ली सिम्टम्स इसमें हो जाते हैं वो लाइक सिंपली हो जाते हैं हेड एक, nausea, vomiting, and यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। एंड अगर हम लेटर सिम्टम्स की बात करेंगे, इसमें हमें हो जाएगा एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल पेन एंड एबनॉर्मल मास फॉर्मेशन, जो हमें लेटर पीरियड में डिटेक्ट हो जाता है। अगर हमें अर्ली सिम्टम्स में ही डिटेक्ट हो जाएगा कैंसर, देन इट कैन लीड टू अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। अगर हम बात करेंगे नाउ हम कैसे डिजीज़ डायग्नोज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन जहाँ हम कहते हैं, हम कैसे डिजीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट दिस कैन डिटेक्टेड ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ओनली, दैट इंक्लूड्स पेल्विक एग्जामिनेशंस। फिजिकल एग्जामिनेशन में ही हमें एबनॉर्मलिटीज दिख जाती हैं तो हम ये डिजीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड, वी कैन स्टिल चेक transvaginal ultrasound. In that, we are introducing transducer and inserting it into the vagina. Then we can see the mass formation and abnormal cell formation in the ovaries. And we can detect this disease from MRI scans, chest X-ray. We can detect that also it is metastasis from the lungs also, and blood test for CA125. And we can detect this cancer from CA125. CA125 is nothing but it is cancer antigen present in our blood. Usually the normal range of this CA125 is 0 to 35 units per ml. If the range is exceeded from 0 to 135 ml units per ml, then it is detected that there will be a cancer of the ovary. And we can also detect this disease from abdominal CT scans with or without contrast, and that can rule out the metastasis of this cancer. So next step we will discuss about this medical management. अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम कैसे ये डिजीज़ मैनेज करेंगे in our units. I have already told you there are so many treatments available for this oncology and this cancer patients. फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हमें क्या करना है, कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं, दैट मीन्स ड्रग थेरेपी। अगर हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर की तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर आर प्रोटोकॉल्स अवेलेबल इन ऑल oncological hospitals because they are using same protocol for every, whether there is lung cancer, liver cancer, they are using the same medications. So here also it is the same. It is usually administered intravenously on an outpatient basis. Outpatient basis पे ही हम ये treatment देते हैं. Patient is not admitted in the hospital. Only in daycare we are giving these chemotherapies and using a combination of drugs. Chemotherapy drugs, usually we are using platinum and taxane agents. In platinum we are using paclitaxel and with combination of carboplatin. These are two combined drugs which are used in ovarian cancer and are most often used because their excellent clinical benefits and manageable toxicity. They have less toxicity and manageable. So these are helpful drugs in oncology in all the cancer treatments. And this carboplatin we can use singly also without combination. Carboplatin may be used in initial treatment and in patients with recurrence, which patients may have recurrence of cancers, and it is used with caution because it has high toxicity. In patients with renal impairment, usually 6 cycles are given these chemotherapies.
And radiation we can also give in combination with chemotherapy. Radiation therapies also we are giving. If we are talking about surgical management in this topic, surgical management is also possible because this if the cancer is growing to the surrounding parts, because they have the stages. There are four main stages of ovarian cancer. You already know, in first stage cancer is contained within the ovary. Cancer is only in the ovaries. अगर हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे कैंसर में, if cancer is in the ovaries, in one or both the ovary, that that is involved in second stage. Cancer is involved other organs also, that is uterus, fallopian tube, bladder and sigmoid colons. This is in second stage. अगर हम थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर की बात करेंगे, कैंसर अगर ओवेरियन में होगा तो ये सराउंडिंग पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाएगा, लाइक pelvis, lining of the pelvis and abdominal, and cancer has spreaded to the lymph nodes also in third stage. अगर आप बात करेंगे, अगर हम फोर्थ स्टेज की बात करेंगे इन कैंसर में, this is called advanced stage, because in this stage cancer is metastasized. Metastasized means cancer is spreaded to the other organs also, that means breasts also, that is metastatic breast carcinoma in fourth stage. This is the last stage of cancer. So here I was telling about you surgical management. Surgical management is the treatment where we are one procedure doing hysterectomy. Hysterectomy is a procedure where this is a surgical removal of the uterus to treat cancer. We are surgically removing the cervix. If we are removing surrounding organ, if cancer is surrounded to the other organs also, then we are doing total abdominal hysterectomy. That means involves removal of the uterus and the cervix also. This procedure can be performed through vaginal, abdominal incision, or nowadays we are doing laparoscopic surgeries. So in laparoscopic surgeries, we are doing this procedure in section wise. We are cutting this, removing the uterus in section wise, and through small incisions, we are doing small incisions in the abdominal. Then we are removing the cancer, and we are removing this uterus. So thank you. If anyone is having a doubt, they can ping me in comment section, then I will let you know. Thank you.